Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome back to English with Ikram. In today's spoken English session, I am going to discuss some idioms and expressions. You know, idioms and expressions are a part of our everyday English. These expressions, these idioms or proverbs, they make the language flowery and attractive and like the native speakers. जब हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में इन इडियम्स का, इन एक्सप्रेशंस का, इन प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी लैंग्वेज बड़ी फ्लावरी, बड़ी अट्रैक्टिव, बड़ी स्कॉलरली लगती है. तो इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में इडियम्स और एक्सप्रेशन के इस्तेमाल, इवन राइटिंग में भी, व्हेन यू यूज़ इडियम्स एंड सच एक्सप्रेशंस एंड प्रोवर्ब्स, योर राइटिंग एंड योर स्पोकन लैंग्वेज दैट बिकम वेरी अट्रैक्टिव. यू कैन से फ्लावरी, बड़ी खूबसूरत लगते हैं जब आप अपनी ज़बान में, स्पेशली अपनी लैंग्वेज में इडियम्स को इस्तेमाल करते हैं. व्हाट इज़ एन इडियम? इडियम्स का जो एक्सप्रेशंस हैं, इनका लिटरल मीनिंग नहीं होता, इनके हिडन लिटरल मीनिंग इज़ डिफरेंट. इफ़ यू ट्रांसलेट दैट idiom, that's totally different, but hidden meaning is totally different. And you have to get yourself familiarized with the hidden meaning, the actual meaning that idiom or that expression is conveying. तो जितने भी idioms होते हैं, इस तरह के expressions हैं, proverbs हैं, उनका जो लफ्ज़ी मतलब है, literal meaning है, that's different. You can't take that literal meaning. But उनका जो hidden meaning है, जो actual meaning होता है, that's something different. So you have to get yourself familiarized. आपने उस मीनिंग को, जो उसका हिडन मीनिंग है, उसका जो बियॉन्ड द मीनिंग होता है, आपने उस तक पहुंचना है, उस साथ अपने आप को फेमिलराइज करना है. और जब आप अपनी राइटिंग में और अपनी स्पोकन लैंग्वेज में जब आप उन इडियम्स को यूज़ करते हैं तो आपकी राइटिंग भी और आपकी स्पोकन लैंग्वेज वो बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी अट्रैक्टिव, बड़ी फ्लावरी, बड़ी खूबसूरत लगती है. तो टुडे आई विल डिस्कस सम idioms and I will explain those idioms, and you have to use those idioms, you have to make those idioms the part of your spoken language and your written language. Idioms are a bit tricky, but it's fun to learn idioms. बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा खूबसूरत, बड़ा मज़ा आता है इनको सीखने में, लेकिन ये भूल जाते हैं. भूलते इसलिए हैं कि literal meaning is totally different and actual meaning, the hidden meaning is totally different. So उनको अपनी लैंग्वेज का पार्ट बनाने के लिए what you are supposed to do, you have to practice these idioms and practice and practice. Try to use these idioms in your writing and your spoken language. Okay, let's get started. Idiom number 1, a blessing in disguise. Very beautiful idiom. Normally people use this idiom in their conversation, in their spoken language. Whenever you talk about a thing that apparently it seems bad, but that's a very good thing. अल्लाह की तरफ से that's a blessing in disguise. ऐसी कोई भी चीज़ जो बज़ाहिर आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन that seems to be very good. In the end, that proves to be very good, very beneficial for you. So that is a blessing in disguise, right? The second is, for example, I give you an example that apparently अब हमारा जो लॉकडाउन है या स्मॉल लॉकडाउन है या इवन मैं कहता हूँ कर्फ्यू भी है, apparently it seems very bad, but this is a sort of blessing in disguise. हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इन डिस्गाइज में, अपने उस रूप में. क्यों? कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़बरदस्त होंगे. इसके बाद के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, इसके बाद के जो हमारे ऊपर हमारे जो असरात हैं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, इफ़ वी डोंट कीप सोशल डिस्टेंसिंग और वी डोंट स्टे एट होम्स, तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स बड़े ख़तरनाक होने वाले हैं. सो इफ़ यू स्टे एट होम्स and if you like this small smart lockdown or total complete lockdown, so apparently it is a bit troublesome, लोगों को तकलीफ़ होती है, but this is a sort of blessing in disguise. तो ऐसी कोई भी चीज़ जो बज़ाहिर आपको लगता है यार बड़ी तकलीफ़ है, अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बाद के जो असरात हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो इन द लॉन्ग रन आपको उसको फ़ायदा देते हैं. तो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. So it's a very good, very attractive, very beautiful idiom, a blessing in disguise, right? Number 2, that is get out of hand. What does it mean? How can you use this idiom, get out of hand? The thing is getting out of hand. Nowadays
this lockdown situation that is getting out of hands of the administration. आजकल जो हालात हैं, लोगों का बाज़ारों में जाना है, जो शॉपिंग है, जो ये सारी चीज़ें, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक कोशिश थी लॉकडाउन की, दैट इज़ गेटिंग आउट ऑफ हैंड, दैट इज़ गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल. हाथों से निकल रही है, मतलब कंट्रोल से बाहर है. दिस थिंग इज़ गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स ऑफ मी. ये मेरी हाथों से निकल रही है मीन्स दिट इज़ गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल. ये चीज़ कंट्रोल से, उसकी ताकत से बाहर हो रही है. राइट? तो गेट आउट ऑफ हैंड मीन्स, टू गेट आउट ऑफ हैंड मीन टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल. इट्स आई थिंक वेरी सिंपल. द नेक्स्ट वन इज hang in there. If you say to somebody, hang in there, you can use this idiom, this expression in your spoken language for conveying the meaning. Don't give up, don't lose your heart. छोड़ना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहो. hang in there. अपने काम में जो भी प्रोजेक्ट है, कोई काम है, कोई बंदा हिम्मत हार जाता है, यार मुश्किल है, मैं मुझसे नहीं हो सकता, नो नो, डोंट लूज हार्ट, hang in there, don't give up. छोड़ना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, hang in there. Whatever the project is, whatever the situation is, if you give this suggestion to any of your friends that don't give up, hang in there. So this is an idiom that is used to convey the meaning that don't give up, hang in there. Right? That's very good idiom. The next one is wrap your hand around something. Wrap your hand around something. What does that mean? Where can you use this idiom, this expression? To understand something that is complicated, to understand that thing completely, wrap your hand around that thing. Any situation or any project or anything, do you give this suggestion, that advice to your friend that wrap your hand around that thing. छोड़ना नहीं है, इसको completely इसको समझना है, इस complicated चीज़ को समझना है. कोई भी चीज़ है, कोई भी situation है, कोई भी task है, आप किसी को कहते हैं कि wrap your hand around this thing. इसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बिल्कुल कम्प्लीटली इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना है, इसको छोड़ना नहीं है. रैप योर हैंड अराउंड दैट पर्टिकुलर थिंग. राइट? तो दिस इज एन इडियम दैट इज यूज्ड टू कन्वे द मीनिंग दैट अंडरस्टैंड दैट कॉम्प्लिकेटेड थिंग, अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली. राइट? द नेक्स्ट वन इज नंबर 5, इट्स नॉट रॉकेट साइंस. ये भी आमतौर पर हम यूज़ करते हैं, वेरी कॉमन इडियम. यार कौन सा मुश्किल है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इतना मुश्किल काम, दिस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ थिंग दैट यू थिंक दैट दिस इज नॉट सो मच कॉम्प्लिकेटेड, यू से नो, दिस नॉट रॉकेट साइंस. ये भी कोई बात है, ये भी कोई मुश्किल चीज़ है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक मुश्किल चीज़ नहीं है. अब इसको आप लिटरल मीनिंग आप नहीं ले सकते कि ये कोई फला की रॉकेट की साइंस नहीं है. मतलब ये आसान काम है, दिस इज एन ईजी जॉब, दिस इज समथिंग वेरी ईजी, नॉट कॉम्प्लिकेटेड. So normally this is a common idiom that normally people use when they want to convey the meaning, that in the sense that this is not so much difficult, this is not a rocket science. आपने इतना इसको हवा बनाया है, इतना मुश्किल बनाया है, this is not a rocket science, ये कोई इतनी मुश्किल तो नहीं है. तो you say this is not a rocket science, it's not a rocket science, ये भी इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, this is not so much complicated. Right? Idiom number 6 or expression number 6, actions speak louder than words. You use this idiom, this expression to convey the meaning that if you want to say something, if you want to teach something, you have to teach by your practical examples, because people believe in what you do, not what you say. लोग आपके जो अमाल हैं, आपके एक्शंस हैं, उन पे बिलीव करते हैं. बातों से, सिर्फ लिप सर्विस या आपकी तकरीरें, आपके लेक्चर से नहीं, आप जो कुछ करके दिखाते हैं, योर एक्शंस दैट स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स. आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, बट यूर प्रैक्टिकली ज़ीरो, यू आर नॉट एक्टिंग अपॉन द थिंग दैट यू आर सेइंग योर सेल्फ. आप जो कहते हैं वो करते नहीं है. इट मीन्स आपकी बातों पे असर नहीं होगा. आपकी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बड़े बड़े डायलॉग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स को कोट करते हैं, बट देयर प्रैक्टिकल इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू देयर लेक्चर, देयर सर्मन्स, देन दे विल नॉट बी इफेक्टिव. उनकी बातें असर नहीं करेंगी. दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है. तो जो बात दिल से निकलती है, दिल से तभी निकलती है जब आपके एक्शंस भी इन अकॉर्डेंस विद दैट सेइंग होते हैं. जब आपकी बातें जो हैं आपके एक्शन के मुताबिक होती हैं, जो आप जो करते हैं, जो कहते हैं वो आप करते भी हैं, तो आपके एक्शन स्पीक लाउडर दैन योर वर्ड्स. खाली खुली बातें, खोखली बातें, जबकि हॉलो जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती.
तो आप अपने प्रैक्टिकल से जो मैसेज दूसरे को कन्वे करते हैं, दैट्स मोर इफेक्टिव, दैट मोर कंड्यूसिव, उसके असरात, उसके रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर होते हैं. तो in such situation, this expression is used that no, actions speak louder than your words, or actions speak louder than words. Actions ये लोग बिलीव करते हैं, खाली बातों पे ज़्यादा असर ज़्यादा देर तक नहीं रहता. फिर the next is add insult to injury. Add insult to injury. This is an idiom, and this is used to convey the meaning that to make the situation worse. You have added insult to injury. आपने सिचुएशन में और ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया और इसको बुरा बना दिया. Due to your interference or your statement, this situation has become more worse. You have added insult to injury. आपकी बातें, आपकी interference, आपकी इस काम ने, आपकी इस चीज़ ने has added insult to injury to make the situation worse. So the next number 8 is don't cry over the spilt milk. Again, this is a very common idiom, common expression that is used when you want to convey the meaning that it's no use, there is no reason to complain about the thing that cannot be fixed. Or you can say, what cannot be cured must be endured. जिस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, उसके बारे में शोर करना, उसके बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है. What cannot be fixed, what cannot be cured, there is no reason to complain about that. तो आप इस सेंस को कन्वे करने के लिए किसी को कहते हैं, यार डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क. जो होना था हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता, उसका कोई वे आउट नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है. दैट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी, बर्दाश्त करो बस. अब कंप्लेन करना, अब शोर करना, अब उसके बारे में उस पॉइंट पे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है. डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क. एक चीज़ हो गई, एक फ़ैसला हो गया, एक रिज़ल्ट आ गया सामने, जो होना था हो गया. अब उस पर बंदा कोई बात करता है, कोई कंप्लेन करता है, कोई आर्गूमेंट करता है, उस पर कोई शोर, कोई फस क्रिएट करता है, तो आप उसे कहते हैं डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क. या एक और इडियम यूज़ होता है, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड. जिस चीज़ का इलाज नहीं है, जिस चीज़ को आप फिक्स नहीं कर सकते, जिस चीज़ का कोई रास्ता आप नहीं निकाल सकते, जो पॉसिबल नहीं है, बस ख़त्म, जो होना था हो गया, दैट इज़ बिकम द पार्ट ऑफ द पास्ट. तो उसके बारे में बात करना, उसके बारे में कंप्लेन करना, ये फजूल है. यू आर जस्ट कंप्लेनिंग अबाउट द थिंग्स फॉर नथिंग. So don't cry over the spilt milk, right? This is a very nice idiom, a nice expression. Number 9, go on a wild goose chase. Very beautiful idiom. Zabardast idiom hai. How do you use this idiom and when do you use this idiom? To go on a wild goose chase. To do something pointless. To chase a thing that is pointless, purposeless. बेमकसद किसी चीज़ का पीछा करना, बेमकसद कोई काम करना. You are just chasing behind, you are just going on a wild goose chase. This is just like a wild goose chase. जब जंगली goose है, उसका chase करना, तो anything that you are doing purposelessly, without any purpose, without any reason, for nothing. You are going on a wild goose chase. Why are you doing this thing? This is just like a wild goose chase. You are going for wild goose chase. So anything that you are doing pointlessly, purposelessly, no reason to do that. कोई मकसद नहीं है, वैसे फजूल आप कोई काम कर रहे हैं, कोई उसका आगे डेस्टिनेशन, कोई पर्पज, कोई गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं है. Then you can use this idiom to go on a wild goose chase. Right? The next one is, it's a piece of cake. I think it's very simple idiom, simple expression for conveying the meaning, for conveying the sense that this is very easy. It's a piece of cake, no problem, no issue, not so much difficult, not complicated. It's a piece of cake for me. मेरे लिए मसला ही बिल्कुल simple है, no issue. So you use this idiom, it's a piece of cake. Right? Number 11, once in a blue moon. Again, this is a very common idiom, very commonly used by the people. Once in a blue moon, seldom, rarely, kabhi kabhar. That my friend visits me once in a blue moon. Once in a blue moon, I do this. Kabhi kabhar.
once in a blue moon. This is an idiom that is used to convey the sense that I do this or that rarely, kabhi kabhar, seldom. This is a very common idiom that is commonly used by the people in writing or in spoken language. Number 12, the ball is in your court. Again, this is a very attractive, very good idiom that is used to convey the meaning in the sense that now the decision is yours. अब कोर्ट बॉल आपके कोर्ट में, अब इट्स अप टू यू हाउ यू हिट द बॉल, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आप कैसे डिसीजन लेते हैं. नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, अ वेरी कॉमन इडियम. आम तौर पे इसको लोग इस्तेमाल करते हैं इवन उर्दू बोलते हुए कि अब बॉल आपके कोर्ट में है जी, अब आपने देखना है, अब आपने फैसला करना है कि हाउ डू यू टेक द डिसीजन, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, हाउ डू यू टेक द थिंग्स. अब आप क्या करते हैं, नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट. या आप किसी के बाद नाउ द बॉल इज़, दो अफ्रीकन के दरमियान कोई मसला है, कोई इशू है, कोई आर्गूमेंट है, तो किसी एक डिसाइसिव पोजीशन में है उसके पास, लोग कहते हैं नाउ द बॉल इज़ इन एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट. टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान कोई चीज़ चल रही है, तो टीचर्स ने अपना रोल, अपना पार्ट प्ले कर लिया है, अब एडमिनिस्ट्रेशन इज टू डिसाइड, एडमिनिस्ट्रेशन ने रोल प्ले करना है. हम कह सकते हैं नाउ द बॉल इज़ इन द एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट, दे आर टू डिसाइड, दे हैव टू प्ले देयर पार्ट. सो ऐसी कोई भी डूल है, ऐसे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसे कोई भी मसला है, तो उस बारे में आप किसी एक जब डिसाइसिव पोजीशन पे होता है, उसने अपना रोल, डिसाइसिव रोल प्ले करना है, आप कहते हैं नाउ द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ एनीवन. So the ball is in your court means now you are to take the decision. Now the decision is yours. You have to take the final step, right? Very common idiom that is very commonly used by the people and very simple one. The next one is number 13, the bone of contention. Again, a very common idiom, a common expression that's being used in writing and in speaking or in spoken language. The meaning of this is the cause of a long-standing issue, the root cause of any argument, the root cause of any issue, any argument, that is bone of contention. उर्दू में कहते हैं फसाद की जड़, किसी मसले की असल रूट, असल cause, that is bone of contention, right? The issues between Pakistan and India, the bone of contention is कश्मीर इशू. बाकी जितने मसाइल भी हैं, जितने भी आपस में टेंशन हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कश्मीर इशू इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन. असल बोन ऑफ कंटेंशन, असल कॉज जो है दरमियान में जितनी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितनी हम टेंशन हैं, उनकी बोन ऑफ कंटेंशन दैट इज़ कश्मीर इशू. इफ़ कश्मीर इशू इज रिजॉल्व देयर विल बी आई थिंक नो टेंशन और नो कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दीज टू कंट्रीज, राइट? द बोन ऑफ कंटेंशन मीन द कॉज ऑफ एनी लॉन्ग स्टैंडिंग इशू. The next, number 14 is a storm in teacup. Again, that's very good, very attractive idiom if you use in your spoken language. You are creating storm in the teacup. उर्दू में कहते हैं बात का बतंगड़ बनाना. आप बात का बतंगड़ बना रहे हो. You are creating storm in teacup. किसी छोटी सी बात को बड़ा करना, बात का बतंगड़ बनाना उर्दू में कहते हैं. इंग्लिश में a big fuss about a minor issue. छोटी सी बात पे बड़ा शोर करना, बड़ी बातें करना, बड़ा उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करना. नॉर्मली सर्टेन women they are in the habit of creating storm in the teacup. You are just creating storm in the teacup. This is not a big issue. इतनी कोई बड़ी बात नहीं, इतना बड़ी बना के पेश कर रहे हैं. आप इसको बात का बतंगड़ बना रहे हैं, आप इश्यू को बहुत बड़ा कर रहे हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. Here in to convey such sort of sense, we use this idiom. This idiom is used to create storm in the teacup. टी कप में कितने सा उसमें स्टॉर्म, इन छोटी सी बात को बड़ा बना के पेश करना, उसको बात के बतंगड़ बनाना. एंड लास्ट इडियम ऑफ द डे इज calm before the storm. A very good expression that is used to convey the sense calm before the storm. It means that something bad is coming, something bad is going to happen. ये खामोशी किसी तूफ़ान का पेश खैमा है. तो इस सेंस को कन्वे करने के लिए ये इडियम यूज़ होता है. तो आई हैव डिस्कस 15 idioms and expressions. If you have
वॉच दिस वीडियो विद कंसंट्रेशन, यू माइट हैव नो कि कितना मतलब अट्रैक्टिव लगते हैं जब यू यूज़ दीज इडियम एंड एक्सप्रेशंस, वेदर इन राइटिंग और इन स्पोकन लैंग्वेज, स्पेशली इन स्पोकन लैंग्वेज. इफ़ यू यूज़ दीज idiom, you look, your language looks scholarly, अब बड़े scholar टाइप आपकी लैंग्वेज बनती है और बड़ा खूबसूरत लगता है और मीनिंग कन्वे करते हुए बड़ा मज़ा आता है और आपकी लैंग्वेज बड़ी फ्लावरी बन जाती है. तो ट्राई टू प्रैक्टिस दिस idioms, और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, जस्ट एक दफ़ा सुनने से ये idioms या एक्सप्रेशन आपकी कम्युनिकेशन, आपकी लैंग्वेज इधर राइटिंग और राइट स्पोकन पार्ट नहीं बनेंगे. आप इनको प्रैक्टिस करेंगे और अपनी डेली कम्युनिकेशन में, राइटिंग में, स्पोकन में इनको यूज़ करें. जितना आप इनको यूज़ करेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी कम्युनिकेशन का, आपकी लैंग्वेज का हिस्सा बन जाएंगे और फिर आपकी लैंग्वेज बड़ी नेटिव लाइक और बड़ी फ्लावरी, बड़ी अट्रैक्टिव लगती है और इनका इस्तेमाल आपकी लैंग्वेज को बड़ा ज़बरदस्त बनाते हैं. और मैं पहले बता चुका हूँ कि इनके अपेरेंट मीनिंग ज़रा डिफरेंट है, हिडन मीनिंग जो इनके जो पीछे जो भी असल मीनिंग है दैट्स टोटली डिफरेंट, और हमारा मतलब वही मीनिंग कन्वे करना होता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.